Hello kids, how are you all? I hope you are doing well. Today we discuss chapter light. Here is some warm-up questions. Write L for luminous objects and NL for non-luminous objects. As you know about these things, so you can do it by yourself. Now let's know about here is sources of light, natural and artificial with examples, luminous and non-luminous objects, properties of light, transparent, translucent and opaque objects with examples, formation of shadow. These are some topics we will discuss in this chapter. Here is light is a form of energy and is very important in all aspects of our life. In the absence of light, plants would not be able to grow as they require sunlight to prepare their food, and in absence of plants, animals and humans would have nothing to eat. We see with our eyes but we cannot see anything with when there is no light. It would be complete darkness and no object would be visible to us. So बच्चे लाइट क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट क्या कि मेन फॉर्म जो आपकी एनर्जी हमें मिलती है वो मेन सोर्स कौन है बच्चा लाइट है। अगर लाइट सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे और अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो क्या होगा एनिमल्स और ह्यूमंस तो उसी पर डिपेंड करते हैं वो भी नहीं होंगे। हम अपनी आइज से देखते जरूर है बच्चा लेकिन अगर लाइट नहीं होगी तो हम अपनी आइज से भी नहीं देख सकते। ओके हियर इज सोर्सेज ऑफ लाइट। लाइट ट्रेवल्स from a light source, it travels in all direction from its source. Light travel करती है बच्चे अपने source से और वो हर एक direction में travel करती है। Okay, here is natural light. The sun is the main source of natural light. Other forms of natural light are the stars and the moon. Stars provide very less amount of light at night because they are very far from the earth compared to the sun. The moon, especially the full moon, provides little light at night, but it is just the light reflected from the sun. Some animals also emit their own light such as glowworms, fireflies and some fish. So बच्चे नेचुरल सोर्स का मीनिंग क्या है जो हमें नेचुरली हमारे पास है लाइक जो हम अगर नेचुरल सोर्स की बात करें दैट इज सन। सन सबसे इंपॉर्टेंट और मेन सोर्स है लाइट का। बाकी आपके स्टार्स भी होते हैं मून भी होते हैं बच्चे। स्टार हमसे बहुत ज्यादा दूर है दैट्स व्हाई स्टार की जो लाइट है वो बहुत कम आती है हम तक। ओके और आपके कुछ एनिमल्स भी होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है जैसे ग्लोवर्म्स, फायरफ्लाइज एंड सम फिशेस। लुक हियर, लुक एट दिस पिक्चर, सन, स्टार, firefly. Here is artificial light. Sources of artificial lights are burning wood, candles, earthen lamps. Nowadays, we use electric bulb, tube and lamps as sources of light. Artificial sources of light are made by humans. So बच्चे जो artificial source है उसका मीनिंग है कि वो किसने बनाए हैं? Humans ने बनाए हैं। जैसे burning of wood, candles, light, bulbs, all are the example of artificial sources of light. Here are some pictures. Look at this picture. Lamp, candle and bulb. Luminous bodies are those which emit light of their own such as the sun, the stars and the bulb. So बच्चे जो luminous bodies होती हैं वो अपनी light emit करते हैं जैसे sun, star और bulb. Now non-luminous bodies are those which do not have their own light such as the moon, book, etc. The non-luminous objects are visible to us when light from luminous objects falls on them. बच्चे जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है और हम उनको देख कैसे सकते हैं क्योंकि जब कोई लुमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट उन पर पड़ती है। लुक हियर, लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट or emit light of their own are called luminous objects. बच्चे वो ऑब्जेक्ट्स जो खुद की लाइट होती है that is luminous object. Objects that do not give out or emit light of their own are called non-luminous objects. As you know that about it, here is example of luminous object: the sun, the stars, a candle, an oil lamp, a torch, an electric bulb, etc. Here is examples of non-luminous objects: table, chair, eraser, pen, pencil, etc. Here is properties of light. Light travels in a straight line. Light travels in a straight line in the form of rays.
It travels very fast at the speed of 3 lakh kilometer in a second. So बच्चे जो आपकी लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है रेज की फॉर्म में, वो बहुत फास्ट स्पीड से ट्रेवल करती है 3 लाख किलोमीटर इन अ सेकेंड. एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर वो ट्रेवल करते हैं. Light does not bend, it can only be blocked. Light continues to travel in a straight line until it hits something else. It is evident from shadow formation that light travels in a straight line. तो बच्चे आपकी जो लाइट है वो कभी भी बैंड नहीं करती है, वो एक स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, फ्लो करती है. एंड द सेकेंड थिंग कि अगर तब तक कोई ऑब्जेक्ट उसके मिड में नहीं आती तब तक वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है और इसी वजह से शैडो का फॉर्मेशन होता है. लुक हियर, हियर इज एन एक्टिविटी. प्लेस एन ऑब्जेक्ट शेप अ बॉल इन द पाथ ऑफ लाइट. आपने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बॉल को आपको कहाँ रखना है, लाइट के पाथ में. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? लुक हियर, we see a dark area on the other side because your ball has blocked the light from reaching the other side. तो बच्चे जो बॉल है वो ब्लॉक करेगी लाइट को, इसलिए आपको दूसरी साइड पे एक डार्क कलर की इमेज दिखाई देगी. look at the picture. look here, the dark area formed is the shadow. so जो डार्क एरिया है वो क्या है बच्चा, शेडो है. okay, here is light reflects when it hits a surface. when light rays hit on any surface, it bounces back, it reflects back. We are able to see objects because light rays enter our eyes after bouncing off rough surface. This is called reflection of light. So बच्चे क्या होता है, जब आपकी लाइट रेज आती है वो किसी ऑब्जेक्ट को हिट करती है, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट बैक होकर कहाँ आती है, हमारी आईज में आती है. उसकी वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देती है और इसको हम बोलते हैं बच्चा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. A rough surface reflects or bounces off light in all directions, whereas smooth and polished surface bounces off light in one direction. Therefore, mirrors are good reflectors. So बच्चे जो आपके स्मूथ सरफेस होती है अगर लाइट उस पे फॉल करती है तो क्या होगा, वो एक सिमिलर डायरेक्शन में क्या करेगी, बाउंसिंग बैक होगी. बट अगर आपकी लाइट किसी रफ सरफेस पे हिट करती है तो वो ऑल डायरेक्शंस में क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी. ओके, इसीलिए हम मिरर्स को गुड रिफ्लेक्टर बोलते हैं. Do you know the sunlight that we see here on earth actually left the sun 8 minutes before. और जो सनलाइट हमें अर्थ पे दिखाई देती है वो अपनी जो है सन से जो 8 मिनट, दैट मीन्स 8 मिनट्स पहले जो है वो चल चुकी होती है. ओके बच्चा, look here, his picture, smooth surface, rough surface. Here is refraction of light. Light rays usually travel in straight lines, but when they pass from one material to another, they can be forced to bend, change direction and continue on a new straight path. The bending is called refraction. So बच्चा क्या होता है, जब आपकी लाइट रे जो है ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में लेकिन वो मटेरियल चेंज करती है. मटेरियल चेंज करने का मीनिंग है, सपोज वो लिक्विड में ट्रेवल कर रही है बच्चा, फिर वो सॉलिड में एंटर करेगी तो क्या होगा, उसका जो लाइट जो है वो बेंड हो जाएगी थोड़ी सी और उसके बाद वो फिर से स्ट्रेट लाइन में स्टार्ट कर देगी क्या, ट्रेवल करना. और वो जो बेंडिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन. ओके, an example of how reflection works is placing a straw in a glass of water with a part of the straw in the water. When looking at a certain angle, the straw appears to bend at the water surface. This is because of the bending of light rays as they move between the air and the water. इसका मीनिंग क्या है बच्चे, आप एक वाटर ग्लास लें, उसमें आप एक स्ट्रो डालें और उस स्ट्रो को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो बेंड हो रहा है. वो क्यों आपको ऐसा लगेगा, बिकॉज बच्चे उसने एयर से वाटर में एंटर किया. ओके, लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज गिवन इन दिस पिक्चर. ओके, लुक हियर, द स्ट्रॉ इज बेंडिंग. Okay, here is we have check and mate. As we already read about these things, so you can do it by yourself. Here is transparent, translucent and opaque objects. Material that allows light to pass through them in a straight line are called transparent objects. बच्चे वो material जो light को pass कराते हैं वो कौन से object होते हैं, transparent. An object on the other side of transparent material is clearly visible. Example, glass, crystal, clear plastic, etc. So these are the transparent objects. Here is material that allows some light to pass through them are called translucent objects. अब बच्चे वो material जो कुछ light को pass कराते हैं that is translucent. That is translucent. Example, objects on other side of translucent material is not clearly visible. Tissue, tissue paper, forested glass,
colored glass, butter paper, colored plastic, etc. These are the example of translucent objects. Here is material do not allow any light to pass through them are called opaque objects. और वो material जिनसे कोई भी light pass नहीं करती है वो होते हैं बच्चा opaque objects. Example: wood, metal, stone, our body, etc. Here is, do you know, space is a dark because light is only visible when it has an object of which to bounce off. स्पेस डार्क है क्यों? क्योंकि बच्चा लाइट तभी विजिबल होगी जब वहां कोई ऑब्जेक्ट होगी जिससे वो बाउंस बैक हो. ओके, वी वांट सनलाइट टू एंटर आवर रूम्स एंड दैट इज व्हाई विंडोज आर मेड ऑफ ग्लास. इट अलाउज अस to see outside our rooms. We also wear goggles in the swimming pool to dive under water and see everything much more clearly. बच्चे, हम चाहते हैं कि हमारे रूम में सनलाइट आए, इसीलिए हमारी जो विंडोज है वो ग्लास की बनी होती है और हम गोगल्स वियर करते हैं जब हम स्विमिंग करते हैं. क्यों? ताकि हमें वाटर में क्लियरली चीजें दिख सके. ओके, हियर इज a common example of translucent material in our bathroom window. It allows some light through but not allows as we want light to enter our bathrooms but at the same time do not want anyone to see inside. एक कॉमन एग्जाम्पल किसका बच्चे? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, दैट इज योर आपके बाथरूम की जो विंडो का जो ग्लास होता है वो कैसा होता है बच्चे? ट्रांसलूसेंट होता है, उसमें से लाइट कंप्लीटली पास नहीं होती है. Doors are generally made of wood which is opaque and does not allow any light to pass through. और जो आपकी डोर्स है वो किसकी बनी होती है बच्चा? वुड की, और वो opaque ऑब्जेक्ट होती है. Some substances are more translucent when the temperature changes. Candle wicks become almost see-through when it is melted. Butter also becomes clear when it is heated in a pan, but it is opaque when cold. अब बच्चे, आपका जो वैक्स और जो बटर है जब वो कोल्ड होते हैं तो वो कैसे होते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स होती हैं. बट अगर आप उनको हीट कर देते हैं तो वो किसमें चेंज हो जाती है बच्चे? ट्रांसलूसेंट. रेनबोज आर मेड व्हेन द लाइट एंटर्स वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एयर, gets reflected inside the droplet and it's reflected again while leaving it. और रेनबो बच्चे कैसे बनता है? जब आपकी जो लाइट है वो किससे रिफ्लेक्ट होती है? आपकी वाटर ड्रॉपलेट से. ओके, हियर इज formation of shadow. A shadow is formed when light is not able to pass through an opaque object. और शेडो कब फॉर्म होती है बच्चे? जब लाइट पास नहीं करती है किसी opaque ऑब्जेक्ट से. When an opaque object come in the path of the light falling on the object cannot reach the other side. Therefore, that particular region becomes dark. The rest of the area as lit, there is nothing to stop the light from passing through. A shadow is always formed on the opposite side of the light. तो बच्चे क्या होता है? कोई ऐसी ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पास नहीं होती है और जब लाइट उससे क्या करती है बच्चा? हिट करती है, तो एक पर्टिकुलर रीजन डार्क हो जाता है और उस डार्क रीजन को हम शेडो बोलते हैं. और शेडो हमेशा आपकी लाइट की अपोजिट साइड पे फॉर्म होती है. ओके, हियर इज टू फॉर्म अ शेडो देयर शुड बी सोर्स ऑफ लाइट. वहां पे सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए. द ऑब्जेक्ट मस्ट बी ओपेक और ट्रांसलूसेंट. ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक डार्क शेडो. बच्चे, ऑब्जेक्ट या तो ओपेक होनी चाहिए या ट्रांसलूसेंट, और जो आपकी ओपेक ऑब्जेक्ट है वो डार्क शेडो फॉर्म करते हैं. एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स फेंट शेडोज. और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की शेडो कैसी होती है? थोड़ी फेंट होती है बच्चा. A transparent object will not make any shadow as light will pass through it. और जो आपकी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है वो कोई शेडो फॉर्म नहीं करते बिकॉज उनसे लाइट पास हो जाती है. ओके, हियर इज एंड अ स्क्रीन. आपको एक स्क्रीन भी चाहिए होती है. इफ वी ब्रिंग एनी ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द लाइट सोर्स the shadow becomes bigger as it blocks more of the light rays, and if we take any object away from the light source the shadow becomes smaller as it blocks less amount of the light. It means बच्चा, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को लाइट सोर्स के बहुत पास लेकर जाते हो तो क्या होगा? शेडो बहुत बड़ी होगी. क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा लाइट को क्या कर लिया? ब्लॉक कर दिया. अब अगर आप वही जो आपका लाइट सोर्स है उसको दूर ले जाएंगे ऑब्जेक्ट से तो आपकी ऑब्जेक्ट की जो शेडो होगी बच्चे वो कुछ छोटी होगी. वाई? क्योंकि अब उसने लेस अमाउंट ऑफ लाइट को ब्लॉक किया. ओके, लुक हियर, लुक एट दिस पिक्चर. हियर इज लाइट सोर्स, स्फीयर, कोर शेडो, shadow core, and in here is cast shadow and screen. So that's how we need the things and the shadow is formed. Okay students, the sun casts long shadows in the morning and evening as the sun is lowest in the sky. तो जो आपका सन है बच्चे वो मॉर्निंग और इवनिंग में क्या करता है? बहुत लॉन्ग शेडोज फॉर्म करता है. The sun casts the shortest shadow at midday.
और जो आपका सन है वो सबसे शॉर्टेस्ट शेडो कब फॉर्म करता है बच्चा? मिड डे में। क्यों? क्योंकि तब वो बिल्कुल आपके सर के ऊपर होता है। ओके, लुक एट दीज पिक्चर्स, मॉर्निंग, नून, इवनिंग. The sun appears low in the early morning and late afternoon. This makes the shadow longer in the early morning and late afternoon than at noon. Okay, here is we have check and mate. As we already read about these things, so you can do it by yourself. What we learn in this chapter, now we will discuss it in a nutshell. Here is light is a form of energy and it travels in a straight line. Light बच्चा किसकी form है energy की? वो एक straight line में travel करती है. The sun is a natural source of light. An electric bulb is an artificial source of light. Sun क्या है? Natural source है बच्चा, और एक electric bulb आपका artificial source. Luminous objects produce their own light whereas non-luminous objects do not produce their own light. Luminous object की अपनी light होती है, non-luminous की नहीं होती है. Here is when light rays hits on any surface, it bounces back, it's reflect back. और जब कोई लाइट रे किस पे अटैक करती है बच्चे, किसी सरफेस पे हिट करती है, वो बाउंसिंग बैक हो जाती है, दैट इज रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. When light travels from one medium to another, it bends. The bending of light is called refraction. Here is material that allow light to pass through are called transparent material. That allow some light to pass through are called translucent, and that does not allow any light to pass through them are called opaque materials. So बच्चे जो लाइट पास कराते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो कुछ लाइट पास कराते हैं वो ट्रांसलूसेंट होते हैं, और जो बिल्कुल पास नहीं कराते लाइट को, दैट इज opaque. Shadows are formed when the path of the light is blocked by an opaque object. और shadow कब form होती है? जब आपकी लाइट के पाथ को कोई opaque object block करती है. Only opaque and translucent object can cast a shadow, whereas transparent object cannot, as they allow light to pass through them completely. Translucent objects make faint shadows. Okay, students, here is we have some keywords. Luminous, giving off light; opaque, not able to seen through; artificial, made or produced by human beings; translucent, semi-transparent. Okay, student. Thank you, students. We will meet again in the next chapter.